start a series of lecture of strategic management subjects. So today we spoke on an earlier lecture regarding strategic manager, strategic management. Today let's learn about leadership and strategic leadership. Now, leadership is the ability of an individual or group of people to influence and guide followers or members of organization and society or terms. Leadership is a process of influencing, motivating, inspiring individual or teams to achieve shared vision, goals और objectives. मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन important इसमें strategic leadership है. Strategic leadership is when manager use their creative problem-solving skills and strategic vision to help team member and organization to achieve long-term goals. Strategic leader जो है वो हमेशा long-term goals का सोचेगा. They encourage employees and help them out to reach the strategic goals. Strategic leader is the process of guiding, directing organization toward achieve its long-term goals and vision. Now, अब एक थोड़ा सा strategic management, ये तो एक थोड़ा सा ये दो चीज़ें strategic leadership को समझ ले कि अगर आप strategic management को पढ़ रहे तो थोड़ा बहुत strategic leadership का भी know-how जो है, strategic leadership का know-how जो है वो ज़रूरी है कि आपके पास हो. Strategic management after COVID-19 इसमें dramatic changes आई है. लोग जो है HR आपका to people and culture चला गया. Now let's come to the slides. The COVID-19 pandemic fundamentally transformed the global economy system, forcing organization, government, institute to rethink, go back and think. What are you doing? क्या हालत कर रहे हो? क्या कहाँ पे extra resources use हो रहे? Survival कैसे होगा? Growth कैसे होगी? Sustainability कैसे आएगी? Now COVID-19 जहाँ पे एक आफत थी, तो वहाँ पे मैं यूँ कहूँ कि strategic managers के लिए was opportunity to learn, to find out the new ways. Strategic management after COVID-19 is defined by adaptability, digital transformation, resilience, and human-centralized approach to the pandemic. Altered organization thinking from efficiency to resilience, from short-term profitability to long-term sustainability. This is important. Short-term profitability से ज़्यादा ज़रूरी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है. एंड फ्रॉम ट्रेडिशनल वर्कप्लेस एनवायरनमेंट टू टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन इकोसिस्टम. Key drivers of change after COVID-19. One is digital transformation, no need to explain. Workforce structuring, reward and hybrid work models, human-centric leadership, sustainability, and ECG. Now challenges in strategic management. थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्विक जाऊँगा. यहाँ पे आप देख ले rising inflation, talent shortage of talent कैसे, new ways of work जो है वो आ गए. क्या आपका talent, आपका resource उसके लिए ready था या नहीं. Increase cyber security risk. Definitely जहाँ पे digitalization होगी तो वहाँ पे cyber security risk जो है वो ज़्यादा होगा. Opportunities for COVID-19 के बाद क्या आ गई? Innovation and digital ecosystem, reskilling and learning economies, green technology, decentralized AI आपके businesses में enter हो गया है. फिर पाकिस्तानी कंटेक्स्ट में हम बात करें. पाकिस्तानी कंटेक्स्ट को मैं आप लोगों पे जोड़ता हूँ. स्लाइड आप लोगों के सामने, इसको पढ़े, कमेंट्स में डू आस्क द क्वेश्चन. फिर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो कुछ स्लाइड्स में आप लोगों पे जोड़ता हूँ. आप इसको अकॉर्डिंगली जो है पढ़े. कमेंट बॉक्स में अपना इनपुट जो है ज़रूर दें. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के कोर्स को हमने कोशिश की कि ये 5-6 लेक्चर में इसको समराइज करके आप लोगों के सामने रखें. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड ऑन साहिबजादा हैदर जान यूट्यूब चैनल.